under the government budget category of revenue foregone year after year. Or when government introduces stimulus package for the industry or airlines or tax exemption for SEZs. The government of India, they would oppose the government of India's fiscal deficit, but if they're opposed to the fiscal deficit, then they should be saying that, listen, don't forego revenue. But that's not what they say, because a lot of the foregoing of revenue is because of concessions given to the corporate sector. So nobody says that, but they say fiscal deficit is bad, therefore please cut down on healthcare expenditures, please cut down on development expenditure, please cut down on food subsidy, etc. So the debate about the fiscal deficit is really a class issue. The globally and developing world today, after the WTO के आने के बाद कोशिश ये है कि किसानों को खेती से बाहर निकाला जाए. ये माना जा रहा है कि फार्मर इन डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया इज इनएफिशिएंट फार्मर. हाँ जी, तो इसको रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है उसके पास, बड़ी क्रूशियल है, विच इज़ लैंड. दैट लैंड हैज़ टू बी यूज्ड आउट फ्रॉम द फार्मर एंड इट हैज़ टू बी गिवन टू द इंडस्ट्री. सबसे पहले उन लोगों ने खेत लिए हमारे यहाँ की, लेकिन खेत लेने के लिए तब उन्होंने कहा नहीं था कि हम कंपनी यहाँ पे बना रहे हैं या ऐसे कुछ. जो दलाल जो है वो होते उन्होंने खेत लिया और बाद में पता लगा कि यहाँ पे कंपनी हो रही है. इन लोगों ने जो खेती लिया था वो कृषक थी, यानी उपजाऊ वाली थी. 3 उपजाऊ आते थे उसमें, और उन्होंने अपने बिक्री के ऊपर ये ज़मीन पड़ित है, बंजर है, यहाँ पे कुछ होता नहीं, ऐसा बताया था. और जो डैम का हमको हमारे खेती के लिए वाटर आता है, वो वाटर भी इन्होंने डायवर्ट कर लिया. पाणी सिंचनाच्या ऐवजी लँको कंपनीला आता करार झाल्याप्रमाणे लँको कंपनीला ते पाणी देऊन राहिलेत आणि त्यांचं ते खोदकाम वगैरे चालू आहे. म्हणजे एकंदरीत कास्तकाराच्या पेक्षा कंपनी गव्हर्नमेंटला महत्त्वाची वाटते. कंपनी ने तो ये बताया कि हमारे पास 600 लोगों का वर्कर्स का स्टाफ है बोले, उसमें 400 लोग काम करने वाले ये ग्रेड टेक्नीशियन रहेंगे और 150 या 100 लोग जो रहेंगे बोले वो खाली गांव वाले रहेंगे. अब गांव वाले में तो वो लोग तो उतने पढ़े लिखे है ही नहीं, तो ये बाकी के लोग कहाँ जाएंगे. हमारी जो डिमांड है, हमें लगता है कि हमारी ये मांगे पूरी होनी चाहिए कंपनी की तरफ से. ये होती है तो ये प्लांट हमें चाहिए, नहीं तो हमारा टोटली 100% इसको विरोध है. हमको ये प्लांट इधर नहीं होना. जो संस्थान आज़ादी के समय खारिज करके एक भारत बनाया गया था, उसी को फिर से लाने की कोशिश और एक तरह की साजिश इसमें दिखती है. पूरा SEZ किसानों से अच्छी ज़मीन जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जहाँ पे पानी अवेलेबल है, जहाँ एक्सपोर्ट वेज, एयरपोर्ट, हाईवेज़ पास में है, उन्हीं इलाकों पर बहुत ज़्यादा नज़र है. जहाँ SEZ आएगा वहाँ पे सारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस डिसॉल्व की जाएगी, पंचायत व्यवस्था नहीं रहेगी. वहाँ पे सिर्फ डेवलपमेंट कमिश्नर राज करेगा और डेवलपर का जिस पर वर्चस्व है, ऐसी एक अथॉरिटी वहाँ पे डिसीजन ले लेगी. ये तो डेमोक्रेसी के भी खिलाफ है. उसके आगे पर्यावरण के कानून में उनको ढील दी गई है. टैक्स कंसेशंस में पानी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारा उनके लिए टैक्स फ्री होगा. In all this mayhem, Indian farmer has lost out on his identity, culture and self-dignity. As a sociologist, I feel that bulk of the agriculture laborers, marginal farmers and small farmers, for them land is not only an economic concept, but it is also a cultural concept, it is also a concept of dignity. The rural youth is cleverly being weaned towards a lifestyle which is alien to its culture. And irony is, getting a loan for a bike and a tractor is much easier than getting a crop loan. ਲੰਬੜਾਂ ਦੇ 8 ਕਿੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਟਾਮ ਲਿਖਾਇਆ. ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦ ਫੋਰਡ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆਇਆ. ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਮੂਲ ਨਾ ਆਇਆ. ਉਹ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜੇ. In this society and in all societies, cities and villages have always coexisted. But over the last, I would say, nearly 30 to 40 years, we have sold our soul to the 19th century European
social evolutionist models. British had an agenda to loot the country. But what are our compulsions? एक महिला अर्थशास्त्रज्ञ होती जर्मनीची ही बाई, तिचं नाव आहे रोझा लुक्झेंबर्ग. तिने तेव्हा हे मांडलं होतं इंटरनल कॉलोनियलायझेशन होईल आणि उद्योगाकरता खेड्यांचं शोषण होईल. 1947 साली आपण स्वतंत्र झालो, पण जे रोझा लक्झेंबर्गनी मांडलं होतं ते आपल्या देशात सुरू राहिलं. कापूस मँचेस्टर लँकाशायरच्या कापड गिरण्यात नाही गेला, तो मुंबई अहमदाबादच्या गिरण्यांमध्ये गेला. कॅपिटल अक्युमुलेशन तिथे, गावो भकास. Just like Rumi's tale on the elephant in the dark, when number of men touch and feel the elephant in the dark and give out description, similarly experts, NGOs, media and political masters discuss everything but not the elephant in the room. The economic dogmas of finance capital which has become globally dominant and which has become intellectually hegemonic, has been internalized by developing country governments through the advice of the world financial institutions like the World Bank and the International Monetary Fund. So they have universally followed the same policies. Manmohan Singh is not unique at all. The government economists have not analyzed the reasons for farmer suicides or understood the reasons that it is price volatility, and if you go in for free trade, the price volatility will continue and will continue to adversely affect our farmers. This is why in 1947, when India became an independent nation, public distribution of food grains was retained as a deliberate social policy of just growth. There was a promise of the anti-colonial struggle that in independent India, the state would support the peasantry and petty producers generally. As a result, after independence, you actually had a whole lot of measures whereby the state stood with the small producers, in particular the peasantry. Because in a situation of capitalism, unless the peasantry gets the support of the state, you would find that they would tend to go under, which is basically what has happened in large parts of the world. Now, in India, this support took a number of different forms. Firstly, you had, for instance, protection of the peasantry from world market price fluctuations. You had the provision of assured prices for a number of crops. You had assured prices being backed up by government procurement. You had the provision of institutional credit, which is something which in particular took off after bank nationalization. You had extension services, wide extension services. You had substantial state-funded research into agriculture, which came up with these high-yielding varieties of seeds and so on, which were then popularized through public extension services. One can go on. In other words, there are really a large number of measures which the government took. फूड कॉरपोरेशन का भी सेटअप हुआ उसी टाइम ही कि वो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार देगी उस प्राइस पे FCI किसानों से खरीदेगी और ख़रीद के फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से गरीबों में सस्ते दामों पे अनाज बेचेगी. तो जब किसानों को ज़्यादा दाम दिया जाएगा और गरीब लोगों को कम दामों पे खाना मिलेगा. तो इसमें दो बातें हुई. एक तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इंसेंटिव स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया. दूसरा है कि गरीबों को सस्ते दामों पे खाना मिलने का भी इंतजाम हो गया, फूड सिक्योरिटी का. तो इस बातों को ध्यान में रखते हुए ही ये CECP का उस समय एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन कहते थे, उसका सेटअप हुआ. It succeeded to a very large extent. First plan period until the early 1990s, the per capita food grains output and availability rose quite significantly from around 152-153 kilograms per capita average during the first plan period. By the early 1990s, it had risen to about between 185 to 190 kilograms per capita. In 1992, New Delhi started the process to dismantle the PDS and FCI in spite of its relevance. Opening up of the economy and exposing our farmers to price volatility is the major reason why farmers were led into the debt trap. In the period of rising prices, they borrowed freely because they thought they would be able to repay, but then when prices started crashing, they were not able to repay.
And our farmers don't have very much holding capacity because they don't have excess funds or the capacity to borrow. If they do not repay loans 1 year, they can borrow from a second creditor to repay to the first. But if they cannot repay the first creditor for the second year, then the second creditor also will not give them a loan. So their holding capacity is at most 3 years. In absolute terms, the loans were not very large, but relative to the farmers' repayment capacity, they were large. The other reason why farmers were driven to taking such an extreme step is because their access to credit was deliberately restricted under the economic reforms policies. Those banks who do give loans, some of them do, they do so through a whole chain of intermediaries. I mean, I think even the RBI has allowed the entry of what it calls facilitators, you know, who actually operate as intermediaries. They're a new class of money lenders coming up between the banks on the one side and the peasantry on the other side. Similarly, when it came to procurement operations, really speaking, the government was withdrawing increasingly from procurement operations, the government corporations, except that I think the food price hike in 2008 once more made them take it seriously. They did away with price support in everything except food grains. Earlier we used to have the commodity boards like spices board, tea board, coffee board and so on, which used to intervene in the market. It would purchase up to a third of the product, whether it's spices or tea or coffee or whatever it is, from the farmers. And many of these farmers are very small scale farmers at a guaranteed price. And that meant that outside players could not lower the market price below that because the government was intervening through the commodity boards. Now, from about 1994 onwards, the commodity boards were told that you give up this procurement operations. Your job is simply to monitor prices, do not intervene in the market. So the commodity boards still exist in name, but they are no longer intervening. And the farmers have been thrown to the mercies of the transnational corporations, agribusiness corporations. The farmers continued to die and there was starvation. The process continued due to government's newfound obsession to keep fiscal deficit in control. Fiscal deficit in itself is not necessarily a matter to be concerned about. But Government of India has an obsession with the fiscal deficit because international finance has an obsession with the fiscal deficit, and under neoliberalism, government's policy necessarily kowtows to the whims and caprices of international finance. I think international finance would like the state to act in its interests as opposed to the interests of the others. The same financiers who are opposed to the US fiscal deficit do not mind $13 trillion of government money being used for sustaining the financial system. After all, that too is something which is a strain on the budget, on the taxpayer. They don't say a word about that. So they really are opposed to fiscal deficit that goes for healthcare, that goes for food subsidy, that goes for public investment, that goes for public development expenditure, that goes for increasing food grain production, things of that kind. They would like the government to in fact support the private sector. The IMF has actually got country after country to pass legislation. In our own country, the FRBM Act, the Fiscal Responsibility and Budgetary Management Act, was passed. It was first formulated by the NDA government, but one of the first acts of the UPA 1 government was actually to get this act passed. What does this mean actually if governments go around cutting back on public spending, which has two components. One is the development spending, and this is very vital because it includes the spending on things like irrigation. There are some vital elements which affect agricultural production. And apart from this, there is also the expenditure on public sector research and development into new crop varieties, the research, the expenditure on extension services. So all these were drastically cut back in the early 1990s. In fact, you have a negative rate of growth. That is, there is absolute decline in these expenditures.
Unless government invested some more amounts in agriculture sector, there cannot be any irrigation facilities, etc. So irrigation facilities are not there. As far as Maharashtra is concerned, as far as India is concerned, 42% of our lands are under irrigation. तरफ तो बातें करते हैं कि मार्केट बेस्ड एग्रीकल्चर हो, कमर्शियल एग्रीकल्चर हो, लेकिन उसके लिए जो बेसिक फैक्टर है कि फार्मर्स को इंसेंटिव होना चाहिए टू प्रोड्यूस मोर, वो इट इज़ नॉट देयर. उनके लिए ज्वार भी नॉन प्रॉफिटेबल है, उनके लिए रागी भी नॉन प्रॉफिटेबल है, उनके लिए पैडी का प्रोक्योरमेंट नहीं होता तो भी नॉन प्रॉफिटेबल है. तो फिर आप क्या करेंगे उनके लिए? तो एक ऐसा बैलेंस्ड प्राइस स्ट्रक्चर बनाया जाए जिसमें इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी भी डिस्टर्ब ना हो और प्रोडक्शन के लिए इंसेंटिव मिले और कंट्री का फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर्ड हो और इन्फ्लेशन भी ना बढ़े. तो ये सारे बातों को ध्यान में रखते हुए आपका प्राइस फिक्स किया जाएगा. क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब आप देते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन स्टेट टू स्टेट काफ़ी वेरी करता है. पंजाब में अगर किसी का 600 रुपया है तो आपका आंध्रा में 900 रुपया है, बिहार में 1000 है. तो इस तरह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी वेरी करता है. तो आप अगर एवरेज के बेसिस पर करेंगे तो ये पॉसिबल है कि काफ़ी सारे स्टेट्स का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कवर ही नहीं होगा. दैट मीन्स आप जो MSP फिक्स करते हो तो वो जो है दैट विल बी मच लोअर दैन इवन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनकर्ड बाय द फार्मर्स इन दोज स्टेट्स. तो ऐसे सिचुएशन में जो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव था कि फार्मर्स को रेम्यूनरेटिव प्राइस दिया जाए, कोई इंसेंटिव दिया जाए टू प्रोड्यूस मोर, दैट इज लॉस्ट. As part of the same restructuring, the seed sector was open to global corporations without objectively studying its long-term effects. बीटी कापूस आणला आम्ही, पण बीटी कापसाला सुद्धा फवारा लागतो, बीटी कापसाला जास्त खत लागतं आणि बीटी कापसाला जास्त पाणी लागतं. हे आता 10 वर्षानंतर मग आम्ही मान्य करतोय. ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या किया है कि उन्होंने केमिकल इनपुट्स को यूज़ एंड अब्यूज़ ने दोनों ने एग्रीकल्चर की जो नेचुरल रिसोर्स बेस है जिसके ऊपर खेती होती है वो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया. आज कंडीशन ये है कि सॉइल की फर्टिलिटी इज़ डिवेस्टेटेड अक्रॉस द कंट्री, स्पेशली ग्रीन रेवोल्यूशन एरियाज़ में तो वो तकरीबन 0 पे है. और वाटर का लेवल जो है इतना प्लूमिट कर गया है वाटर माइनिंग होने के कारण. केमिकल पेस्टिसाइड्स ने कंटेमिनेट किया है एनवायरनमेंट को और प्लस फूड चेन को सारे को. उसका जो सारा मिला जुला जो इम्पैक्ट है वो किसान को सहना पड़ता है. सो व्हेन वी से रिफॉर्म एग्रीकल्चर इट एक्चुअली मींस प्राइवेटाइज एग्रीकल्चर व्हिच वुड बी द बेन फॉर इंडियन एग्रीकल्चर. तो लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे. To facilitate easy compliance of government policies, independent farmers movement was intentionally truncated. मैं यहाँ कह सकता हूँ दावे से, जितने हमारे असेंबलीज़ में MLAs हैं, जितने पार्लियामेंट में MPs हैं, उनको इंडस्ट्री की तो बात पे पकड़ हो सकती है, व्यापार की बात पे पकड़ हो सकती है, उनकी एम्प्लॉइज़ की बात पे पकड़ हो सकती है. किसान के मुद्दे पे कोई पकड़ नहीं. किसान को काटने के लिए उनके पास हर साधन है. और किसी की ये जो लॉबिंग की बात है, किसान की कोई लॉबी नहीं, सिर्फ गले से ऊपर से बात ये लोग करते हैं. किसानों का 60% समाज है, लेकिन उसके स्वतंत्र प्रतिनिधि तो नहीं है किसानों की बात रखने के लिए. तो हमने इस बार ये बात चलाई है कि किसानों के स्वतंत्र MLAs प्रतिनिधि और MP प्रतिनिधि किसानों के बीच में से चुनकर जाने वाले होने चाहिए, जो किसानों की ही बात करेंगे. आज उस प्रकार का स्वतंत्र प्रतिनिधित्व नहीं है. However, in Western Maharashtra, farmers still managed to hold on to their rightful demands because sugarcane is the financial syrup crucial to the upkeep and maintenance of local political leaders and their political agendas. विदर्भाच्या शेतकऱ्यांना आळशी आळशी म्हणून आपण किती दिवस म्हणत राहणार हो. मी परवा पृथ्वीराज चव्हाण साहेबांना बोललो आहे की किती दिवस तुम्ही विदर्भाच्या शेतकऱ्यांना आळशी आळशी म्हणून शिव्या देत राहणार आहात. मी त्यांना सरळ सरळ असं म्हटलं की ऊस उत्पादक आणि कापूस उत्पादक कोरोबाव आणि ओलीत मला भांडण नाही लावायचं, पण व्यवस्थेमध्ये ज्या काही सबसिडी आहेत पाणी वापरणाऱ्या शेतकऱ्याला, त्या सबसिडी तुम्ही काढून टाका म्हटलं. आम्ही विदर्भाचा शेतकरी तुम्हाला एक पैसाही मागायला येत नाही. आज शरद पवारांची जी मुलाखत आहे त्या मुलाखतीत शरद पवार स्वतः असं म्हणतात की ऊस उत्पादकांना सरकारच्या तिजोरीतनं, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या तिजोरीतनं पुष्कळ काही दिलं जातं, पण त्या तुलनेमध्ये जिरायत कोरडवाहू शेतकऱ्याला काहीच दिलं जात नाही. मला त्यांची चिंता होते. मला खरंच आज खूप बरं वाटलं. उशिरा का होईना, पण शरद पवारांनी कबूल तर केलं.
our import-export policies are detrimental to the Indian farmers. Cotton peasantry was facing a problem of these prices, etc. How? Why? Only because most of the cotton from America and other countries was allowed to be imported in this country without any import duty. Then with much hesitation, they increased the import duty, and the import duty was only 5% at the beginning. अटल बिहारी वाजपेयी सरकारला सुद्धा इंटरव्हीन करावं लागलं आणि पहिल्यांदा गव्हावर 50% आयात कर लागला त्या देशामध्ये. तांदळावर 80% आयात कर लागला. साखरेवर 60% आयात कर लागला. खाण्याच्या तेलावर पाम ऑइलवर 85% आणि सोयाबीनच्या ऑइलवर 45% आयात कर लागला. पण कापसावर फक्त 5% आयात कर होता. The government is taking